Jai Hind to all of you. I am Abhinav Singh, assistant professor from site called Civil Engineering Department, Bharati University में. Okay. So today we will discuss about the canal design. So our topic for discussion is design of canal system. Means in which we will discuss about how canal is work, how we can design the canal for a particular type of discharge, particular type of condition. So in this case we will discuss about some empirical formulas, some empirical design steps for the design of canal for multi-purpose system. Okay. Now, first of all, types of canal design. In this, we will discuss about the canal design. Means canal design for various distinct purposes. Just like that. For example, design for drainage channel. It means in this we will design for drainage channel system firstly, and another for the irrigation canal system. Means we have to categorize this design in two consecutive ways. Means drainage channel design and irrigation channel design. For the design parameters, the design consideration naturally vary according to the type of soil. Means the type of soil is the first main factor in the design consideration, that we are constructing a canal on which type of soil condition, which type of ground condition. So for this we will firstly know about the velocity of flow for the canal system should be critical, and next one is the design of canal, for which known as Kennedy's theory and the Lacey's theory. In this we have to discuss about the two theories of design. That one, first one is the Kennedy's theory and another one is the Lacey's theory, based on the characteristics of sediment load and the characteristics of the canal work. Okay. So there are some important terminology related to the canal design which will be very useful, and we should know about that thing before the design of any type of canal, any type of work. So it includes alluvial soil, non-alluvial soil, silt factor, coefficient of roughness, mean velocity, critical velocity ratio, means CVR, it is denoted by M, region channel condition, hydraulic mean depth, and full supply discharge, and economical section. So these are the basic terminology which are very useful for the design of any type of canal, and before the design we should know about this type of thing. So it will be very helpful for the design purposes or for the design of canal for other different type of purposes. Okay. So we will discuss one by one. Now first one is the alluvial soil. What is alluvial soil? The soil which is formed by the continuous deposition of silt is known as alluvial soil. Means a layer by layer deposition of silt take places, and in this case alluvial soil have been generated. The river carries heavy charge of silt in rainy season. Means in the rainy season the amount of silt by the river carry in a very huge amount. So this type of soil is normally generated from the soil of the river carries. Now next one is the alluvial, non-alluvial soil. Okay. The soil which is formed by the distribution of rock formation is known as non-alluvial soil. Means this type of soil has been formed by the disintegration of rocks and accumulation of them. So this is the non-alluvial soil. In this silt particles are not contained. It was found in mountainous region of the rivers. Means the river which is passing from the mountainous region. In this case, the non-alluvial soil we can found from there. Now, next one is the silt factor. What is silt factor? During the investigation of work in various canals, the alluvial soil generated Lacey established coefficient for determine the discharge in the canal section. So Lacey's introduced a factor that is known as silt factor. Means this factor was introduced by the Lacey's, and it is known by the name of Lacey's silt factor. Okay, it is depends upon the mean particle size of the silt. It means it is directly depend upon the mean particle size. Means particle जो है आपको किस तरीके के साइज के सिल्ट के जो उस कैनाल के अंदर, वाटर के अंदर हमारी फ्लो हो रही है, it is denoted by small n. So in this slide we have discussed about the alluvial soil, then non-alluvial soil, then silt factor. Now move on to the next one. Okay. Now coefficient of roughness. The roughness of the canal bed affect the velocity of flow. Means if the bed is smooth, the flow will flow out easily. If the bed of the canal will be rough, then it will take some obstruction, or it will say some other type of obstruction, just like that. The flow cannot pass easily in a particular passage or particular path. So For that purpose, we have to know about the coefficient of roughness, means how much roughness is in the field and how we can solve, how we can plane that surface
for the continuous or easy flow of the discharge in that particular type of canal. So it is denoted by small n, and we have to find out the roughness of that particular region. Okay. Now the mean velocity. Mean velocity means क्या होता है? The velocity depends on 0.5 response by the mean velocity, where d is the depth in the canal water. So mean velocity by the chase equation, we can use this chase equation. V is equal to c under root rs, where c is the chase constant, r is equal to head radius, and s is the slope of the channel. Now mean velocity by the Manning's formula. This is v, which we find out by the chase constant, or this is the v we can find out by the using of Manning's formula. V is equal to 1 upon n, r to the power 2 by 3, and s to the power 1 by 2, where r is the head radius, s is the slope of the channel. So by using this formula, we can find out the mean velocity in a particular channel according to the condition. If c is given, then we can use this formula. If n and r and rest of the nanometers are given in our data, so we can use this type of formula. Now critical velocity. Critical velocity is when the velocity of flow is such that there is no silting or no scouring action taking place. Means ना चैनल के अंदर हमें सिल्टिंग हो रही है, किस चीज़ का जमा होना, ना स्काउरिंग यानी कि उस चीज़ का उखाड़ना, उस चीज़ का निकलना in the canal bed, then the velocity is known as critical velocity. It is denoted by v naught. V naught is equal to 0.546 d to the power 6, where d is the depth of the water. Okay. Now next one is the critical velocity ratio. What is critical velocity ratio? It is denoted by CVR. So the ratio of mean velocity v of a particular velocity v naught is known. The critical velocity ratio is denoted by mean velocity CVR. CVR is equal to v upon v naught, where the three conditions are right. First one is that if m is equal to 1, then there will be no silting or no scouring. Means the value of m, if we take in 1, if the value of m is given, CVR value is given 1, then we can say that in the channel, particular channel, there is no silting condition and no scouring condition. Means the deposition and the scouring has not been taking place. When the second one condition, if m is greater than 1, means now we can say that the condition has been changed. If m is greater than 1, then scouring will occur. Means it depends on this relationship value. If m is greater than 1, then scouring will place, and in the next condition, just a vice versa condition, when m is less than 1, then silting takes place. So we can just we can easily see these three type of relationships. If m is equal to 1, then no silting and no scouring. It is clearly written as if m is greater than 1, then scouring will take place. If m is less than 1, then silting will occur. So by this ratio, by this formula, by this three equation, we can easily identify in the channel what type of condition has been occurred. Okay. So by finding this n, we can find out a condition in the canal where silting or scouring will occur or not. No. Now next one is the rigid channel. What is rigid channel? When the characteristic of a bed, of a bank, material of the channel are same, that has to be transported material, and when the silt charge or silt grade are constant, then the channel is said to be rigid channel and is called the rigid channel condition. This ideal condition is not practically possible. Normal cases में हम इस चीज़ को देखते हैं, ये एक मानी जाती है ideal condition है, but it is practically not possible easily. Okay. So now next one is the hydraulic mean depth. Hydraulic mean depth, R is equal to A by P. The ratio of cross section of the area, where A is the cross sectional area of the region, and P is the wetted perimeter of the channel. Means we have to take in the area and we have to take in the wetted perimeter of the section, and by divided any cross sectional area to the wetted perimeter, we can find out the hydraulic radius, that is P. Okay. So these are the basic terminology. Now next one is the full supply discharge. Now what will the full supply of our channel? The maximum capacity means the maximum capacity of the channel which is designed. मीन्स हमें क्या करना है, जो हमने चैनल डिजाइन करना है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज कैरी कर पा रहा है, जिसके लिए उसे डिजाइन कर रहे हैं, इज नोन एज फुल सप्लाई डिस्चार्ज. द वाटर लेवल ऑफ द कैनाल ट्रांसपोर्ट टू द फुल सप्लाई लेवल इज नोन एज फुल सप्लाई लेवल. मीन्स जिस डिजाइन डिस्चार्ज के लिए हम उसको डिजाइन कर रहे हैं वो उस चीज़ को कैरी कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, या उसके अंदर वो चीज़ कितनी फुलफिल हो रही है. ओके. नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज द
इकोनॉमिकल सेक्शन. इकोनॉमिकल सेक्शन क्या होता है? इफ कैनाल सेक्शन सच दैट अर्थ ऑब्टेन फ्रॉम कटिंग, मींस हमने कैनाल की कटिंग करी, आप उस फिगर में देख सकते हैं कैनाल की कटिंग करी, दैट इज एक्सकेवेशन, मतलब कटिंग मींस एक्सकेवेशन, हमने उसको निकाला, कैन बी यूटिलाइज्ड, वो उसका यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है? फॉर्मिंग द बैंक्स, मींस ये आ गया फिलिंग एरिया, बैंक्स हमारे आ गए, ठीक है. तो हमने क्या किया? फॉर्मिंग द बैंक्स एंड द सेक्शन इज नोन एज इकोनॉमिकल सेक्शन, मींस वी could not buy, we could not purchase, we could not borrow from the another side. We have excavated that particular type of soil from that particular region and also used that one for the formation of banks, and that is known as the economical section. Again, the discharge will maximum and minimum according to the cross section of the area, means discharge condition depends upon the cross section area for which it has been designed, for which it has been worked. So here is our condition. We can see that there is, we can know about, no borrow this type of soil from the other layer. We have to cutting, we have to obtain that thing from excavation, and we have to utilize that for the formation of our banks. Okay. Now next one is the, so in the last slide till then we have discussed about the basic terminology used in the canal design work. Now unlike canal design for non-alluvial soil, so in this condition we will discuss about the non-alluvial soil canal design, means the कैनाल जो हमारी किसी पर्टिकुलर रीजन में बन रही है, वो सर नहीं नॉन अलुवियल सॉइल के रीजन पे हमारी बेस हो रही है. नॉन अलुवियल सॉइल्स आर स्टेबल एंड नियरली इम्परवियस. दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ नॉन अलुवियल सॉइल. सो इन दिस इट इज नियरली इम्परविजिबल, एंड फॉर द डिजाइन ऑफ कैनाल दिस टाइप ऑफ सॉइल the coefficient of roughness plays an important role in this type of design. The coefficient of roughness, how the soil or the roughness is working, or it is helpful or it is creating obstruction in the design of the canal. So we have to identify this roughness, or we have to know about this roughness, because it is, plays an important role. But the other factors like the sieve factor has also role. Here the velocity between the consideration very close and critical velocity. So the mean velocity by Chizzy expression and Lemming expression has been considered. तो इसके अंदर हमें क्या करना? Chizzy और Lemming expression जो हमारी होती है, हमने की थी, हम उनके एक्सप्रेशन को यूज करेंगे to find out the critical velocity. So let's take some formulas. So mean velocity of Chizzy equations. Here we can say that मीन वेलोसिटी बाय यूजिंग चिजी फॉर्मूला. तो हमने चिजी फॉर्मूले को उसके अंदर यूज किया है किसको? मीन वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए. तो v इज इक्वल टू c अंडर रूट rs, वेयर v इज द मीन वेलोसिटी ऑफ द पर्टिकुलर चैनल इन मीटर पर सेकंड. ओके. नाउ c इज द चिजी's कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ चिजी's कांस्टेंट ऑलमोस्ट गिवन इन द प्रॉब्लम्स. And now r is equal to hydraulic radius, as we have already discussed about this. Hydraulic radius is equal to a by p. A is the cross sectional area of particular channel, and p is the wetted perimeter of that particular type of channel. Now s is equal to bed slope of canal as 1 in n. n means रफनेस, कितनी हमारी इसमें आ रही है, n की वैल्यू हमारे स्लोप के ऊपर डिपेंड करेगी, 1 in 100, 1 in 4000, जस्ट लाइक दैट फॉर एग्जांपल. तो इस पे डिपेंड करेगी. अगेन द चीज कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड. अब बात आती है चीज कांस्टेंट को निकालने के लिए. अब चीज कांस्टेंट को निकालने के लिए हमारे दो टाइप के फॉर्मूले होते हैं. पहला होगा हमारा बेंजीन फार्मूला एंड सेकंड वन इज द कटर्स फार्मूला. तो बेंजीन फार्मूले की बात करते हैं, वेयर c इज इक्वल टू 87 अपॉन 1 प्लस k बाय अंडर रूट r, वेयर k is the Benzes constant, this one is k Benzes constant, and r1 is the hydraulic mean depth. So if we have these two factors and these two constants in our data, that is Benzes constant and hydraulic radius. So by using these two constants, we can easily find out the c, that is Chizzy's constant. It is related to this. Now next one is the Cutter's formula. If by using this formula 1 upon n plus 23 plus 0.00155 upon whole to the s, and whole upon 1 plus 23 plus 0.00155 upon s bracket close and by r. If these constants are available in our data, so we will use this formula for find out the Chizzy's constant, where n is equal to coefficient of roughness, s is equal to bed slope, r is equal to hydraulic mean radius. If these three things are given, or we can find out from the already given data, then we can use this Cutter's formula for finding out again the Chizzy's constant. So this is very helpful for find out the
mean velocity by Chizzy formula. So this type of data will very helpful in the design problem, and this type of constant will be helpful to find out which formula या which equation we will use to solve this velocity. Okay, now mean velocity by Manning's formula. In the last we will discuss about the Chizzy's constant, means Chizzy's formula. Now in this we will use the Manning's formula. If the condition is that if v is equal to 1 upon n r to the power 2 by 3 s to the power 1 by 2, this is the Manning's formula. Okay, for this discharge is flowing q is equal to ab by the continuity equation where q is the discharge. Okay, डिस्चार्ज आ गया, A इज इक्वल टू हमारा क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया. ओके, ये क्रॉस सेक्शन हमारा एरिया आ गया. V इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लो, मींस यूनिट मीटर पर सेकंड, डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड में आ गया, एरिया आ गया पर सेकंड मीटर पर स्क्वायर में. तो हियर गिवन डिस्चार्ज इन क्यू में A इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वाटर सेक्शन इन मीटर पर स्क्वायर and v is the mean velocity in meter per second. अब इसके अंदर क्या कहते हैं, नोटेशन दिए गए, इनको हमें फॉलो करना होगा अगर हम इस फॉर्मूले में यूज करके कुछ निकालना चाह रहे हैं. इफ वैल्यू इज k इज नॉट गिवन देन इट मे बी अज्यूम, अगर k की वैल्यू नहीं गिवन है, हमें पर्टिकुलर इससे डिजाइन करना जो हमने k की बात की थी. सो अनलाइन कैनल के लिए k की वैल्यू हमें जो यूज करनी पड़ेगी इतनी करनी पड़ेगी, यानी 1.03 से 1.75 के बीच में करनी पड़ेगी. और फॉर लाइन चैनल, अब लाइन चैनल की बात आ रही है, अभी हम क्या करते हैं लाइन की बात, तो हमें इस वैल्यू यूज करना पड़ेगा. इफ वी आर कंस्ट्रक्टिंग आवर चैनल ऑन लाइन चैनल या लाइन कैनल, देन वी विल यूज k is 0.45 to 0.85. if the value n is not given then it may be assumed for unlined channel के this one and for line channel के लिए it's this one. So here are the crystal clear condition what formula we have to use this type of design, what are the constants which are available in our data. If the constants are not available, then how we can find out. If the conditions are given and the data is not given, so we have to firstly see that we are designing our non-alluvial canal on soil or alluvial canal soil, means according to this unlined canal or line channel we have to use this data for our design purpose. Okay, now move on to the next one. So this is the basic problem. On the previous formulas we are using and we are solving this numerical. So in this problem, design an irrigation channel with the following data. इसमें क्या हमें डेटा गिवन हुआ है कि भाई हमें डेटा है, हमें उसकी हेल्प से अपने एक पर्टिकुलर डिजाइन को फॉलो करना है. ओके, तो क्या करना है इसमें, डिजाइन डिस्चार्ज. तो डिस्चार्ज हमारा कितना है 24 क्यूबिक हमारा गिवन है. परमिशन परमिसिबल मीन वेलोसिटी हमारी कितनी है, परमिसिबल मीन वेलोसिटी की बात करेंगे तो हमारी 0.80 मीटर पर सेकंड है. बेड स्लोप की बात करेंगे 1 in n, दिस इज द n जो हमने पहले पढ़ा था. साइड स्लोप की बात आ रही है हमारी 1 है, ये s वाली वैल्यू आ गई 1:1. चीज़ी कांस्टेंट की बात अगर हम करके चल रहे हैं c = 2 है, तो दीज आर द गिवन पैरामीटर्स. ये होगा हमारा गिवन डेटा, ये हमारा गिवन डेटा आ गया कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ अवेलेबल है. अब इसको सॉल्व करने के बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला, बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन. एरिया निकालेंगे हम, किससे निकालना है हमें, डिस्चार्ज से निकालना है बाई, और क्या आ गया हमारे पास का परमिसिबल वेलोसिटी, तो क्या हो गया q/v. तो हमें एरिया की वैल्यू हमारी मिल गई. आफ्टर दैट हमने एरिया से निकालना चाहा b + d का रिलेशनशिप, तो b + d का हम रिलेशनशिप निकालेंगे तो उससे क्या चीज़ निकलनी है हमारी b + इससे कि p = b + 2.4, यानी कि हमारी वैल्यू आई है उससे हम इससे निकालेंगे. r = क्या होता है हमारा a, एरिया ये आ गया, और p की वैल्यू हमने पूरी की पूरी पुट डाउन कर दी. अब चीज़ कांस्टेंट में हमें क्या पुट डाउन करना है, v वेलोसिटी हमें पता है, c हमें पता है, r पता है नहीं है हमें s पता है, यहाँ गिवन है. इन सब चीज़ों में क्या करना है, हमें एक चीज़ जो है ये फाइंड आउट करनी है. ठीक है, ये हमारे पास गिवन नहीं है, and rest of the variables are given. So by using no basic mathematical we can find out the r is equal to 1.65 meter. By putting r we can find out the d and b. So this is the basic formula which we have already discussed, which we have already derived in the previous slides. So that it will be very helpful. So it will be very helpful in this case for basic of using Chizzy equation formula. Okay. Now these are some exercise problems relating to the previous example. Here also some data are given. आप अगर देखेंगे इसमें सारा कुछ बेसिक डेटा गिवन है हमारे पास में. क्या क्या चीज़ गिवन है, कैनाल का डिस्चार्ज गिवन है, मीन वेलोसिटी गिवन है सेम,
बेसिस कांस्टेंट के, जो भी हमने पहले पढ़ा था पुरानी स्लाइड में, के गिवन है, साइड स्लोप गिवन है, फाइंड आउट द अलाउड बेड स्लोप। तो इसमें क्या की जा रही है, एस की बात की जा रही है, the rest of the constants are available here. So by using the previous formula, by using the previous equation, we can find out this one easily. This is the practice problem. Now another one is the practice problem. इधर भी क्या है, डिस्चार्ज हमारा गिवन है, परमिसिबल वेलोसिटी गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ रफनेस n गिवन है, हमारा साइड स्लोप गिवन है, और b/d रेशियो भी गिवन है। आप देखिए इसके अंदर क्या है, हमें जो चीज फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट द बेड विड्थ एंड बेड स्लोप ऑफ द कैनाल। तो हमें क्या करना, बेड विड्थ और बेड स्लोप, जो हमारा साइड का स्लोप है, बेड का स्लोप है, जिस स्लोप पे हमारा कैनाल डिजाइन होगा, उसको फाइंड आउट करना बाय यूजिंग द प्रीवियस वन फार्मूला। तो दीस आर द बेसिक थिंग्स व्हिच विल वेरी हेल्पफुल फॉर द डिजाइन ऑफ collegiate canal in any type of sections. Okay, now move on to the next one. अब मेन हमारी चीजें आती हैं कि हमें क्या करना है, ऑनलाइन कैनाल डिजाइन ऑन अलुवियल सॉइल बाय कैनेडीज थ्योरी। अब हमें इसके अंदर किससे आना है, अब हमारी मेन चीज आ रही है कैनेडीज थ्योरी। यानी कि हमने स्टार्टिंग में हमारी दो थ्योरीज होती है, कैनेडीज थ्योरी और बेसिस थ्योरी। तो अब तक हमने जो पढ़ा वो हमने बेसिक पढ़ा कि हमें किसके फॉर्मूले को यूज करना है, कैनाल के डिजाइन में किस टाइप की चीजों को आगे वर्क करना है। तो हमने इसके अंदर उस चीज को जाकर के देखा और अपना पढ़ा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो क्या कैनेडीज थ्योरी कहती है, कैनेडीज थ्योरी कहती है कि हमारे जो भी चैनल है उसके अंदर क्या होता है, एडी जनरेशन होता है। द करंट एडीज डेवलप ड्यू टू रफनेस ऑफ द बेड। तो रफनेस की वजह से होता है। तो इन्होंने क्या असम्पशन दी है कैनेडीज के अंदर, द क्वालिटी ऑफ सस्पेंशन सिल प्रोपोर्शनल टू द बेड विड्थ। पहला इन्होंने असम्पशन दिया है। इसके बाद में क्या दिया है, इट इज एप्लीकेबल टू दोज चैनल व्हिच आर flowing through the bed consisting of sandy silt की कंडीशन है, and same grade of silt, यानी sandy silt की कंडीशन है और इनकी थ्योरी में दूसरा क्या है, sandy silt और उसका ग्रेड हमारा एप्लीकेबल होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज द, इट इज एप्लीकेबल फॉर दोज चैनल्स व्हिच आर फ्लोइंग थ्रू बेड कंसिस्टिंग sandy silt and the same grade of silt। तो मतलब क्या, इन्होंने बेसिक में assumptions दिए हैं उन चीजों को जानने के लिए कि हम किस assumption के बेस पे किस थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं और उनके जो थ्योरी है वो किन किन चीज़ों को हमारी जस्टिफाई करती है। ओके, तो दिस इज द बेसिक थ्योरी कैनेडीज की। इन्होंने कुछ फॉर्मूला अपने दिए किस चीज़ के लिए, निकालने के लिए, क्रिटिकल वेलोसिटी निकालने के लिए बी नोट का फॉर्मूला उन्होंने प्रोवाइड किया, सी नोट दी। बट जब इसके अंदर जो है मीन पार्टिकल साइज को इंट्रोड्यूस किया तो इन्होंने फॉर्मूला को रेक्टिफाई किया और उससे हमारे निकल करके आया। आफ्टर दैट अगेन रियलाइज क्रिटिकल वेलोसिटी वाज अफेक्टेड बाय द ग्रेड ऑफ द सिल। तो इन्होंने क्या किया, सिल फैक्टर को अपने इंट्रोड्यूस किया। तो क्रिटिकल वेलोसिटी हमारी जो थी वो फाइनली इस फॉर्मूले से हमारी निकल के आई, v नॉट इज इक्वल टू 0.546 इनटू d टू द पावर 0.64। इस फॉर्मूले को मैंने यूज किया और अपनी चीज़ों को आगे प्रोसीड किया। अब कुछ इन्होंने ड्रॉबैक्स भी दिए कि भाई थ्योरी का ऐसा नहीं है पर्टिकुलरली कोई चीज़ हमेशा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्क करे। इनको फील हुआ कैनेडीज को कि हाँ कुछ इस थ्योरी के ड्रॉबैक्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, द थ्योरी इज लिमिटेड टू एवरेज रिजिम चैनल ओनली। केवल एवरेज टाइप के चैनल जो हमारे बनेंगे रिजिम कंडीशन के उसके लिए है। द डिजाइन चैनल इज बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर मेथड। एक इन्होंने ये चीज़ करी कि ट्रायल एंड एरर मतलब उस चीज़ को एक बार हमने पर्टिकुलर डेटा को अज्यूम किया, फिर हमारा सही डिजाइन नहीं है, हमने फिर उसको दोबारा चेंज करके देखा, मतलब ट्रायल एंड एरर है। द वैल्यू ऑफ m वाज फिक्स्ड। ठीक है, एक इन्होंने क्या करा, एब्रप्टली फिक्स कर दी। सिल्ट चार्ज एट सिल्ट ग्रेड नॉट कंसीडर्ड। इन्होंने कहते हैं सिल्ट चार्ज और सिल्ट ग्रेड को कहा कि हम इसके अंदर इस चीज़ को नहीं ले पाएंगे। ठीक है, देयर इज नो इक्वेशन फॉर डिटरमाइनिंग द बेड स्लोप। डायरेक्टली को बेड स्लोप को निकालने के लिए इक्वेशन नहीं दी है, डिपेंडिंग ऑन द कटर्स इक्वेशन होनी, तो हमें इसके लिए कटर्स इक्वेशन पर ही बेस होना पड़ेगा, डायरेक्टली हम नहीं निकाल पाएंगे। अभी हम जाके न्यूमेरिकल करेंगे तो वी विल सी हाउ वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। एंड द रेशियो ऑफ b/d हैज नॉट सिग्निफाइड ओनली फॉर द थ्योरी। इन्होंने कुछ अपने बेसिक असम्पशन दिए जो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि ये इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाए। सो मूव ऑन टू द डायरेक्टली डिजाइन प्रोसीजर। अभी हम डिजाइन स्टेप्स को जानेंगे, इसके बेस पर आगे अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन में करेंगे। उसके बेस पे हम ये चीज़ कर पाएंगे कि हाँ हमने जो अपने डिजाइन को लिया है, जो हमने फैक्टर्स दिए थे वो किस लेवल पर जस्टिफाइड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, फर्स्ट डिजाइन स्टेप में हमें क्या चीज़ निकालनी है, क्रिटिकल वेलोसिटी। ये फॉर्मूले को यूज करेंगे जो हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया था। नाउ द मीन वेलोसिटी v इज इक्वल टू c अंडर रूट rs। अब इसको अंडर रूट में लेकर ना उनकी पावर 2 कर दिया, तो आप इसको v इज इक्वल टू c अंडर रूट rs कर सकते हैं, वेयर m इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी, b इज इक्वल टू फुल सप्लाई डेप्थ इन मीटर, r इज इक्वल टू हाइड्रोग्रेडियस इन मीटर एंड s इज इक्वल टू बेड स्लोप 1 in n।
आफ्टर दैट अभी उन्होंने क्या किया, सी कटस फॉर्मूला, जो भी हमने लास्ट प्रीवियस स्लाइड में देखा था, कटस फॉर्मूला को यूज़ किया है, क्योंकि डायरेक्टली उन्होंने क्या किया, ड्रॉबैक में हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते सी की वैल्यू को निकालने के लिए। सो इन्होंने कटस फॉर्मूला को यूज़ कराया है, और कटस फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब हमने चीनी इक्वेशन की बात की थी प्रीवियस स्लाइड्स में। सो सी इज इक्वल टू 1/n ब्रैकेट में 23 प्लस 0.00155 s अपॉन 1 प्लस 23 0.00155 अपॉन s ब्रैकेट क्लोज n अपॉन अंडर रूट में r। n क्या है यहाँ पर रखना, इसको शो किया है। अब b बाई डी रेशियो निकालने के लिए हमने वैल्यू को अज्यूम किया है। डिस्चार्ज क्या होता है हमारा, बाई कंट्रीब्यूशन q इक्वल टू n टू v क्रॉस सेक्शन एरिया मीन वेलोसिटी, और बाकी के दोनों चीज़ों को बेसिक ट्रायल एंड एरर पे किया है, ट्रायल एंड एरर पे, ठीक है। तो ट्रायल एरर की बात करते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम को समझते हैं, क्योंकि अभी हमने क्या डिजाइन स्टेप्स को देखा, जाना कि डिजाइन स्टेप हमें किस तरीके से वर्क कर रहे हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अब हम इसको प्रॉब्लम की डेटा की फॉर्म में जब करेंगे तो वो डिजाइन स्टेप किस तरीके से यूज हो रहे हैं, हमें कैनल को डिजाइन करना यहाँ पर क्लियर समझ में आएगा। ओके, तो इसमें क्या मेंशन है, डिजाइन एंड एजुकेशन चैनल विद द फॉलोइंग डेटा। अब डेटा क्या क्या गिवन है, देखिए डिस्चार्ज गिवन है इसके अंदर हमारी, रफनेस n गिवन है पर्टिकुलर वैल्यू, CVR1 गिवन है, बेड स्लोप 1/500 ये गिवन है, अज्यूम अदर रीजनेबल डाटा इफ फॉर डिजाइन इज रिक्वायर्ड। अब इसमें क्या है, बाकी डेटा आपको जरूरत है तो आप उसको अज्यूम कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायल एंड एरर पे इन्होंने क्या किया है, अज्यूम फुल सप्लाई डेप्थ, इन्होंने डेप्थ अज्यूम करी है। देखिए ये जो लाइन है आपकी ट्रायल एंड एरर, इन्होंने जो पहली थ्योरी में इस चीज़ को करके अज्यूम करना है, यानी कि एक ट्रायल एंड एरर में गए, फर्स्ट ट्रायल के लिए हमने डेप्थ लिया, आफ्टर दैट क्या क्रिटिकल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करते हैं। v नॉट इज इक्वल टू जो प्रीवियस फॉर्मूला था, जो हमने कल अभी लास्ट इसमें स्टेप में देखा था, डिजाइन स्टेप में आप देख सकते हैं हमने उसके बेस पे इसको ना निकाला था। यहाँ पे देखिए सारे फॉर्मूला, तो हम उसी अपने आगे स्टेप पे चल रहे हैं कि वी नॉट की हमने वैल्यू इसके थ्रू फाइंड आउट कर ली, तो हमारी वी नॉट की वैल्यू से निकल करके आ गई। आफ्टर दैट फिर हमने m इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने क्या माना था, स्टेटिक डिस्कवरी नहीं है तो हम ये लेके चलेंगे, तो इसको गिवन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या था, लेस देन 1 इक्वल, उससे पहले देखेंगे ग्रेटर देन 1 और इक्वल 1, तो हम फिलहाल इसमें m की वैल्यू को 1 आउट करके चल रहे हैं। तो n अगर हम 1 मान के चलेंगे तो मींस क्या होना चाहिए, v नॉट इज इक्वल टू डिजाइन वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी हमारी एक दूसरे के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट कंडीशन में आनी चाहिए, तभी हम डिजाइन कह सकते हैं कि हमारा डिजाइन सही है। अदरवाइज कहीं ना कहीं हमने जो अपना डेटा अज्यूम किया है उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन रिक्वायर्ड है। तो क्या किया हमने, सबसे एरिया फाइंड आउट किया, एरिया के लिए प्रीवियस फॉर्मूला था वही ट्रायल का फॉर्मूला हमने लगाया, अपना निकाल लिया, तो एरिया हमारा निकल करके आ गया। फिर इसके बाद में एरिया निकालने के बाद हमने क्या किया, वेटेड पेरीमीटर निकाल लिया। बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन किया हो, तो हमें इसके साथ में ये वेटेड पेरीमीटर निकल करके आ गई, ठीक है। इसके बाद हमने थर्ड क्या निकाला, r इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ऑलरेडी हमने बताया a बाई p, ठीक है। तो क्या हुआ, एरिया हमारा हुआ वेटेड पेरीमीटर, इन दोनों के रेशियो हमने r इज इक्वल टू a बाई p निकाला। अब हमने क्या देखा नेक्स्ट, इसके बाद में कटऑफ फॉर्मूला जो हमने पहले ऑलरेडी डिफाइन किया था, उस कटऑफ फॉर्मूला में जितने भी हमारे पैरामीटर के डेटा थे वो सारे पुट डाउन करें और फाइनली हमें सी की वैल्यू देखो कितना है 44.20। अब इस सी की वैल्यू को हमने कहाँ पुट डाउन करना है, चीजें इक्वेशन के अंदर, चीज इक्वल टू इक्वेशन कहते हैं v इज इक्वल टू c अंडर रूट rs, तो v इज इक्वल टू c आ गया, यहाँ से डायरेक्टली ये वाला वैल्यू, ये हो गया हमारा r, ठीक है, और ये हो गया s, दोनों चीजें हमारी गिवन है, r और s आ गया। इससे हमने निकाला अपनी वेलोसिटी को। अब हमें इसका कंडीशन चेक करना है, यानी मीन वेलोसिटी के जो हमने निकाला था m इज इक्वल टू 1 लिया था, उसमें कंडीशन क्या गिवन थी, v इज इक्वल टू v नॉट। बट अब हम यहाँ पे देखेंगे v इज इक्वल टू v नॉट की कंडीशन में ये हमारी वैल्यू जा रही है लेस देन 1, सॉरी ये वैल्यू है लेस देन 1 जा रही है, तो मतलब क्या है, हमारी लेस देन 1 की कंडीशन में हमें अपने डिजाइन को कहीं ना कहीं से इसमें क्या होगा, चैनल विल बी इन सिल्टिंग। हमने सिल्टिंग इसका भी कंडीशन पढ़ी थी, तो क्या हुआ, चैनल के अंदर सिल्टिंग हो रही है, यानी कि जमाव हो रहा है, तो इसका मतलब होगा चैनल के अंदर जमाव होगा, तो इट मींस जिस रिक्वायर्ड डिस्चार्ज के लिए हम उसको डिजाइन कर रहे हैं दैट विल नॉट बी फुलफिल दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिस्चार्ज एंड इट विल नॉट कैरी दैट टाइप ऑफ डिस्चार्ज, सो it is design not satisfied, okay। Here full supply level assumed by the trial is satisfactory result। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने डिजाइन को ट्रायल के फिर से रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अब इसके रेक्टिफिकेशन पे जाते हैं। अब हमने क्या किया, सेकंड ट्रायल लिया, ठीक है। फर्स्ट ट्रायल में हमने डेप्थ अज्यूम की थी, अब नेक्स्ट हमने फिर से अज्यूम द फुल नेक्स्ट डेप्थ, अब हमने डेप्थ की वैल्यू फिर से चेंज करी, अगेन वही प्रोसीजर पे हम जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी निकाली हमारी, ये आ गई m इज इक्वल टू 1 कंडीशन में, यहाँ पे भी हम देखेंगे वही सेम कंडीशन m इज इक्वल टू 1, तो v और v नॉट यानी डिजाइनर क्रिटिकल वेलोसिटी हमारी इक्वल कंडीशन में आनी चाहिए। फिर हमने एरिया निकाला वही पुराने फॉर्मूला को यूज करके, एरिया के बाद में हमने क्या किया, एरिया निकाला वेटेड पेरीमीटर नॉर्मल ट्रापेजॉइडल का यूज करके, फिर r निकाला वही a बाई p करके, a बाई p करके r निकाल दिया अपना, हाइड्रोजन
रेडियस इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन वेक्टर पेरीमीटर। फिर हमने कटऑफ फार्मूला को यूज किया। अगेन कटऑफ फार्मूला यूज करने के बाद में क्या हुआ हमारा, चीजी कांस्टेंट की जो हमारी पर्टिकुलर वैल्यू थी वो हमने फाइंड आउट करी कि चीजी कांस्टेंट की वैल्यू क्या हमारी आ रही है। तो चीजी कांस्टेंट की वैल्यू के लिए b इज इक्वल टू c अंडर रूट r इसको हमने फॉलो किया। तो c अंडर रूट r को फॉलो करने के बाद हमने क्या देखा कि हमारी जो वेलोसिटी हमने निकाली है वो नियर बाई कितने बन के आ रही है, नहीं आ रही है। एंड वी कैन से दैट the value we have to find out is 0.97, which is almost equivalent to 1. So in this case CVR is very close to 1. It is already written there. So our design may be accepted. इसमें हम क्या कर सकते हैं, और इसकी वजह से हमने D और B जो हमने फाइंड आउट किए थे चैनल के डिजाइन के लिए वो हमारे सही हुए। तो मीन्स क्या किया, लास्ट हमने अपने डिजाइन में देखा था कि हमारी जो वेलोसिटी की वैल्यू थी वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट कंडीशन में नहीं आ रही थी 1 के। नाउ वी हैव adopted another maximum value by the trial and error, and we can already repeat the same procedure and find out that our value or our design is okay. So these are some exercise problems in the previous base condition, so we can use these examples for the design practice purposes. Now next one is the condition of Lacey's theory. So first of all we have discussed about the Kennedy's theory. Now the next one is the लेसीज थ्योरी। तो लेसीज ने कुछ असम्पशन दिए कि कहते हैं यूनिफॉर्म और अल्टीमेट कंडीशन होनी चाहिए, ये बेसिक थ्योरी, ट्रांसपेरेंट हमारा चैनल होना चाहिए, ग्रेड से चार्ज का हमारा कांस्टेंट कंडीशन रहना चाहिए। इस तरीके इन्होंने कुछ थ्योरीज को डिफाइन किया और पर्टिकुलरली इन्होंने अपने कुछ फॉर्मूलेस को दिया। तो ये थ्योरी के बाद हम फॉर्मूलेस को बेसिकली देखेंगे जो हमारे डिजाइन के स्टेप्स में यूज में आने वाले हैं। तो लेसीज ने क्या दिया, f इज इक्वल टू 1.76 इनटू d अंडर रूट डी। फिर इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट फॉर्मूला दिया AF स्क्वायर का फॉर्मूला दिया। तो ये बेसिक उन्होंने कुछ डिजाइन स्टेप्स के फॉर्मूले को दिया जिनकी हेल्प से हमने अपनी लेसिस थ्योरी के असम्पशन डिजाइन को फॉलो किया। इसके अंदर कंडीशन क्या ली, b इज इक्वल टू दिस वन 10.8 इनटू r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/3। नाउ स्लोप इक्वेशन इन्होंने क्या डिफाइन करी, स्लोप इक्वेशन इन्होंने देखी है, उसके अंदर चीजें क्या है, s का फॉर्मूला इन्होंने डिजाइन किया और फिर दोबारा अगेन s के साथ में इन्होंने इस फॉर्मूले को रेक्टिफाई किया। तो फाइनल कार्बन डेप्थ निकालने के लिए इन्होंने एक फॉर्मूले को दिया। अब इन सारे डिजाइंस को हम एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं क्योंकि हमने जो भी डिजाइन लिया उसको हम एक न्यूमेरिकल और डेटा फॉर्मूला यूज करेंगे, देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस टाइप ऑफ डिजाइन। तो इसके अंदर क्या गिवन है, डिस्चार्ज हमारा गिवन है 10 किलोमीटर का, इसके अंदर मीन पार्टिकल से पार्टिकल साइज हमारा गिवन है, साइड स्लोप गिवन है और फाइनली हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट द बेड स्लोप। मींस इसमें हमें बेड स्लोप फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल पुराने फॉर्मूले को यूज किया 1.76 अपॉन अंडर रूट में मार्क करके वही फॉर्मूले को निकाला, फिर वेलोसिटी फाइंड आउट करी, एरिया हमने फाइंड आउट किया, प्रीवियस स्टेप यूज करके अगर आप देखेंगे तो वही सब कुछ चीज इसके अंदर दी हुई है, वही हमने आगे नेक्स्ट यूज करेंगे, डिजाइन स्टेप को ही हमने दोबारा फॉलो किया है। फिर हमने वेक्टर पेरीमीटर निकाली, आर अगेन क्या निकाला, आर निकालने का फॉर्मूला वही था। फिर हमने सारी वैल्यूज को पुराने वाले जो हमने प्रीवियस डिजाइन स्टेप थे उसके अंदर पुट डाउन किया, पुट डाउन करने के बाद में हमने एस की वैल्यू निकाली। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमारी इक्वेशन डेवलप की। फर्स्ट वन इज इक्वेशन बी एंड डी की, एंड सेकंड वन इज द अगेन बी एंड डी की इक्वेशन। इन दोनों को हमने इक्वेशन को एक्सपेरिमेंटल से सॉल्व किया तो इससे हमें डी की और बी की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकल गई जो हमें पर्टिकुलर डिजाइन में हेल्पफुल रहेगी। ओके, ठीक है। तो these are some exercise problem which will be very helpful for the design of canal by using Lacey's formula. Here are some drawbacks of this particular type of Lacey's theory equation, and now we will directly go for the now check the for this presentation, and these are some references which we have used for this preparation of the presentation of for this work. I hope the session was very informative for you and was for very informative. Thank you and Jai Hind.